Dr. Anil Mehta is presently working as Professor of Management Department of Legal Studies, Organizational Behavior, Behavior Organization, Business Ethics and Ethos, Training and Development, Human Resource Development, Compensation Management, Personality Development and Soft Skills, etc. He has edited 2 books on productivity, performance and work culture and training for change. I request to Dr. Anil Mehta that he deliver their. Good morning, everyone. Good morning, sir. Thank you very much, madam, for giving my extensive introduction to these participants. Dr. Subhash Sharma ji, other office bearers of RK Sansthan, Jaipur, and dear participants, at the outset, I congratulate Subhash Sharma ji for, and that is the ultimate purpose of any entrepreneurial development program. Today I'll be talking to you on an important aspect of setting up of a new venture, whether it's small, medium or large. That is preparation of business plan for entrepreneurship venture. I would like to make this session as interactive as possible. Preparation of business plans. That is considered a very, very important aspect for a beginner in the field of entrepreneurship. Can you tell me that what is the need of preparation of a business plan and what exactly the business plan is all about? I consider business plan as a core for the success of any venture. Why is it so? We'll be bilingual and please start with telling me this aspect. Number 1, what is business plan? Number 2, what is the need of developing business plan for anyone? Sir, in Yeah. please tell in Hindi language. हाँ बिल्कुल, ठीक है सर, हम हिंदी में बात करेंगे। तो बिजनेस प्लान, हालांकि मैं इसकी भी हिंदी कर सकता हूं लेकिन वो ज्यादा क्लिष्ट हो जाएगी। तो बिजनेस प्लान क्या है, पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि ऐसी क्या आवश्यकता है कि पूरा सत्र हम बिजनेस प्लान पर ही डिवोट करें कि बिजनेस प्लान में कौन कौन सी बातें हमें इंक्लूड करनी चाहिए। आप बताएंगे पहले? जस्ट इसको शुरू कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, ये आ नहीं रहा है। उसमें नहीं है, इसमें आ नहीं रहा है, उसको आप देखिएगा। हाँ सर, आप बताएंगे कि बिजनेस प्लान क्या है? सर किसी व्यवसाय को चालू करने से पहले हमें एक प्लान बनाना पड़ता है कि मैं किस चीज़ का प्रोडक्ट बनाऊँ, इसका मार्केटिंग कहाँ होगा, मार्केटिंग में क्या क्या प्रोसेस होगा, ये सब चीज़ें देखते हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही है कि किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक होता है कि व्यवसाय क्या है, हम किस उद्देश्य अथवा लक्ष्य को लेकर हम वे व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं। नंबर 2, तीसरी बात यह है कि उस व्यवसाय में हम करेंगे क्या, और चौथी बात यह है कि उस व्यवसाय के संचालन के लिए किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी, कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी, उन संसाधनों का स्रोत क्या होगा, कहां से वो संसाधन जुटाए जाएंगे,
और उसके अलावा जितने भी पहलू हैं उन पर हम पहले से विचार करते हैं। कारण यह है कि आज के इस परिवर्तनशील वातावरण में किसी भी नए वेंचर को स्थापित करना जोखिमपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि उद्यमिता की जो पहली विशेषता है वो यही है कि उद्यमी किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए उसमें जोखिम वहन करने की क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि उद्यमी जोखिम वहन नहीं कर सकता तो उसे अपना उद्यम स्थापित नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही ये बात महत्वपूर्ण है कि जोखिम, रिस्क और गैम्बलिंग, जुआ, दोनों में फर्क है। व्हाट इज ए गैम्बल? गैम्बल क्या है सब? जहां कि आप भविष्य के बारे में सोच विचार नहीं करते, किसी चीज का होना या ना होना पूर्णतया अनिश्चित होता है। लेकिन किसी भी नए उद्यम के साथ ऐसा नहीं है। जोखिम अवश्य है लेकिन जुआ नहीं है। हम किसी भी उद्यम में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सोच समझकर हम जोखिम वहन करते हैं। और जब हम बिजनेस की प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम संभावित जो भी भावी अनिश्चितता है उनका कुछ आकलन करें और यह सुनिश्चित करें कि हम किस सीमा तक जोखिम वहन कर सकते हैं और जोखिम को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। तो पहली बात जो आपने बताई बिल्कुल सही है कि किसी भी व्यवसाय के संबंध में भावी योजनाओं का निर्माण करना, दैट इज बिजनेस प्लानिंग। किसी ने सही कहा है कि यदि आप योजना बनाने में असफल हो रहे हैं तो एक प्रकार से आप असफलता के लिए योजना बना रहे हैं। इफ यू आर फेलिंग इन प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू फेल। और यदि हम प्लान पहले बना लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने भावी जो एक सिनेरियो है, भविष्य का जो एक चित्र है, वो काफी सीमा तक सामने आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना बाद में एक्शन भी ले सकते हैं। सो दैट्स व्हाई बिजनेस प्लानिंग इज very important. Business planning is concerned with what, when, how, where, etc. क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, किन प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी, हमारी रणनीतियां या हमारी व्यूह रचना किस प्रकार की होगी, संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा। जब इसका एक पूरा खाका हम पहले से चित्रित कर देते हैं, that is referred as business planning. We know that in order to operate any business, we need two types of resources. Number one, the external resources. Number two, the internal resources. How to arrange the external resources and how to arrange the internal resources, that is also very important. And at the time of business plan, we decide that what will be the combination of internal resources as well as the external resources. And number two, it is not the actual implementation. In business plan, we just visualize the future scenario of the business, किस प्रकार से हमें आगे प्रोसीड करना है, किस प्रकार के हमारे प्रोजेक्शंस होंगे और किस प्रकार से हम डिसीजंस देंगे ताकि यथार्थ में या व्यवहारिक रूप से उसी के अनुरूप कार्य किया जाए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड डेवलप ए ब्लूप्रिंट बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई इट इज एसेंशियल टू डेवलप बिजनेस प्लान। इनफैक्ट न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए लेकिन किसी भी बिजनेस प्लान की आवश्यकता बहुत सारे कारणों से पड़ती है।
In fact, what are the tasks of developing any business plan? Just see. The first one is we can identify the innovative ideas. In fact, यदि हम उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जहाँ की वर्तमान में और उद्यम भी कार्य कर रहे हैं, तो शायद हमारे लिए एक लीडरशिप पोजीशन को एक्वायर करना मुश्किल होगा। बिजनेस प्लान का पर्पस यह है कि इनोवेटिव आइडियाज को आइडेंटिफाई किया जाए। इसको रहने दो। व्यवसाय के अवसरों को आइडेंटिफाई किया जाए, नए विचारों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी व्यवहारिकता का विश्लेषण करके उन नए आइडियाज को एक बिजनेस प्रपोजल में ट्रांसलेट किया जाए। उसके लिए आवश्यक होगा कि हम डिटेल बिजनेस प्लान डेवलप करें। सेकेंडली, रिसर्चिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एज यू नो कि किसी भी व्यवसाय के लिए स्वॉट एनालिसिस का किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। स्वॉट स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बिजनेस प्लान के अंतर्गत हम व्यवसाय के लिए उपलब्ध अवसरों का आकलन करते हैं, संभावित जोखिमों या खतरों का भी विश्लेषण किया जाता है और साथ ही साथ हम उस व्यवसाय को यथार्थ में बदलने के लिए हम कितने सक्षम या सशक्त हैं या हमारी कमजोरी क्या हो सकती है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करके उसे एक प्लान के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। देन वी कैन असेस द फिजिबिलिटी ऑफ आइडियाज। विचार बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन शायद सारे विचार व्यवहारिक नहीं होते और जब तक कि उस विचार की दीर्घकाल के लिए अगर हम उसे लाभदायकता में बदल नहीं सकते तो ऐसी स्थिति में उस विचार को क्रियान्वित करना संभव नहीं होता। थ्रू बिजनेस प्लान वी कैन असेस द फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस आइडिया एंड देन इन ए बिजनेस प्लान वी कैन allocate द रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर ताकि हम अपने लाभों को बढ़ा सकें। सो these are the 5 important tasks of any business plan: identifying the new ideas, identifying the opportunities, identifying the threats, assessing the strengths and weaknesses, and finally analyzing the feasibility or viability of that idea, and finally allocating the resources in a best possible manner. And for that it is very much essential to prepare any business plan. Now the question arises that what are the steps involved in developing any business plan? In fact, all the steps can be classified into these categories, 7 important categories. The first one is preliminary investigation. Secondly, idea generation. Number 3, environmental scanning. Number 4, feasibility analysis. Number 5, that is drawing a functional plan. Number 6 is project report preparation. And lastly, evaluation, review and control. These are the 7 important steps of developing any business plan. Now, one more question arises here, and the question is that once a business plan is developed, कौन-कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका संबंध बिजनेस प्लान से है? क्या बता सकते हैं कि कौन-कौन से पक्षकारों के लिए दैट बिजनेस प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न केवल उद्यमी के लिए लेकिन और स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिजनेस प्लान का प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। What you have to say? Who are the stakeholders in any business plan? Number 1, the bankers or the creditors. सबसे ज़्यादा important जो है वो है
बैंकर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए, क्योंकि जब भी आप अप्रोच करते हैं लोन के लिए, दे विल ऑलवेज आस्क फॉर द योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, and that is always based on your business plan. Secondly, your suppliers and vendors, they are also interested in particularly in a new business about your business plan. The third important thing is to seek various clearances, sanctions and approvals. Again, business plans are required. And similarly, sometimes our big vendors also want our business plan, that what exactly our business plans are. So I think business plan is very important, not only from the perspective of entrepreneur, but from other perspective also. It is very much essential to develop a strong business plan. So here the first important thing is preliminary investigation. इनफैक्ट बिजनेस प्लान को प्रारंभ करने से पूर्व ये अत्यंत आवश्यक है कि हम एक प्रारंभिक जांच पड़ताल करें कि हम किस प्रकार से आगे प्रोसीड करेंगे, एंड फॉर दैट वी कैन फर्स्ट डेवलप द or we can just study the available business plans in the similar line or in the similar area. That is, what are the available business plans. In fact, कोई ना कोई एक रेफरेंस या कोई ना कोई बेंचमार्क या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके आधार पर हम अपना बिजनेस प्लान डेवलप कर सकें. ये बिजनेस प्लान हम सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री का भी ले सकते हैं, या जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स और डेटा है उसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन. अनलेस द आइडिया इज टोटली न्यू, if we belong to certain industry or if we are producing or rendering the same kind of services, then we can always see the available business plans. We are not saying that we should blindly follow the existing plans, but the existing business plans will always be helpful to us for developing our own business plan. So you can see here, yes. So on that basis, we can develop our business plan. That is, we can decide that what should be the benchmark for our business plan and investigate the available business plan in the similar industry or line. The second important thing is idea generation. That is also important, that we should develop the idea. In fact, किसी सेशन में आपकी बात हुई होगी विस्तार से कि किसी भी नए उद्यमी के लिए idea generation is very very important. Can you tell me that what are the sources of idea generation? What are the sources? कहाँ से आपको आइडियाज आ सकते हैं एक नए वेंचर को शुरू करने के लिए? Yes, very good. That is, if there is any problem persisting, यदि हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, तो वह प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में वी कैन डेवलप सर्टेन आइडियाज. व्हाट एल्स? प्रॉब्लम इज वन. उसके अलावा कुछ और? नेसेसरी. हाँ, जरूरत पड़ने. जब वो तो आपकी प्रॉब्लम में आ गई कि आपको ज़रूरत है या आप नीड महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ की. सो ऑब्वियसली नीड. Market analysis is one, that is taking the feedback from the prospects and the customer, that what are the need of the market, या customer किस प्रकार की expectations करते हैं. So taking the feedback from the customer or the prospect. What else? Newspapers can also provide you a lot of ideas, because particularly the economic analysis or the economic page of the newspaper is a very good source of idea generation. Then the government policies and programs can also provide you certain ideas, because government decides many times that what will be the future thrust area
what are those areas where the government will be providing a huge thrust in the years to come? What are those areas where new loans will be sanctioned on the priority basis? So the number of sources can be tapped to idea for idea generation. That is important. The third important source can be, this is the sources of idea. Brainstorming. What is brainstorming? Brainstorming. जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनको लिख लेना उनके। कैसे करेंगे सर? Brainstorming. I think in brainstorming what we do is that we invite बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं. जैसे इस ग्रुप में we can present a problem and on that basis, in order to solve that problem, what we can do, invite the ideas, and on that basis we can develop certain new and novel idea to solve that kind of problem. So brainstorming is basically meeting of mind, and certainly जब बहुत सारे लोग एक ही समस्या पर विचार कर रहे हैं तो बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा फिजिबल और वाइबल आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. सिमिलरली द ग्रुप डिस्कशन, किसी प्रॉब्लम को अगर डिस्कस किया जाए ग्रुप में, in that case again lot of idea will be developed. Then data collection through the questionnaire, very popular source. प्रश्नावलियाँ भरा के रेस्पोंडेंट से on that basis we can get the suggestions and ideas. Similarly we can invite the ideas from the professionals also. जो इस क्षेत्र के experts हैं वो भी बहुत सारे ideas दे सकते हैं. Similarly market research can also be conducted, जैसे आपने कहा था market analysis. So you can do the market analysis and you can develop lot many ideas. And then यदि किन्हीं उत्पादों का आप विदेशों से आयात कर रहे हैं तो उस बेसिस पर कि उन प्रोडक्ट्स के बारे में रेस्पॉन्सेस कैसा है, भारतीय परिस्थितियों में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, कैसे उन प्रोडक्ट्स को हम इंडिजिनस रूप से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट कैन बी ए गुड आइडिया. एंड देन कमर्शलाइजिंग द इनोवेशंस, जो भी इनोवेशंस हुए हैं, टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन बी वाइबल एंड कमर्शलाइज. ऑन दैट बेसिस लॉट मेनी आइडियाज कैन बी डेवलप्ड. सो after preliminary investigation, idea generation can be a very powerful source for starting any venture, and that can be the basis of business plan. And then environmental scanning is very important from the perspective of developing a business plan. And here the SWOT analysis is important कि जिस परिपेक्ष में या जिस वातावरण में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास क्या अवसर उपलब्ध हैं, क्या क्या संभावित जोखिम हैं, क्या क्या हमारे पास शक्तियाँ हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से और कौन कौन से वीकनेस है. दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और हर बिजनेस प्लान में यू हैव टू डू द डिटेल्ड एनवायरमेंटल स्कैनिंग इन द फॉर्म ऑफ दैट SWOT analysis. Strength, weakness, opportunities and threats. That is the third important step in any business plan presentation. And the fourth important thing here, what is the external environment? जब आप बात करते हैं external environment की, you want to find out the opportunities and threats, and here you will have to do the socio-economic appraisal. Ultimately, the products are to be supplied to the society and services are to be rendered to the society. जिन लोगों को आप अपना उत्पाद बेचेंगे, आइडिया आप सेल करेंगे, you will have to see their perspective and background. That is socio-economic appraisal. The second important part will be technical appraisal. उत्पाद को बनाने के लिए क्या आपके पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी या नो हाउ है, और इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन कैन यू इंपोर्ट दैट टेक्नोलॉजी. दैट हैज टू बी assessed on a price. किस प्रकार से आप वो टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करेंगे, दैट यू विल हैव टू मेंशन इन योर बिजनेस प्लान प्रपोजल रिपोर्ट ऑल्सो.
The third important thing is that is economic appraisal. We will have to appraise that proposal from the economic perspective also. What is the current state of the affairs in economic environment? डिमांड सप्लाई पोजीशन किस प्रकार की है, मार्केट कितना है, साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स किस प्रकार के हो सकते हैं, इन्फ्लेशन की रेट क्या है. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दैट हैज टू बी अप्राइज्ड. देन we'll have to see the demography also, what is the population, what is the age group, and what are the potential from that demographic point of view. And finally, government appraisal is also important, that is what is the government policy, the industrial policy, the taxation policy, and the policy towards that particular industry. So it means that socio-economic background is important, then economic appraisal is important, technical appraisal is important, and finally we'll have to see the government perspective also. Perhaps when we start appraising all these, then we will be able to know about the strength and weakness of any organization. And then we'll have to see the internal environment of the organization, that is our own strengths and weakness, particularly for that particular product and services. That is हमारे अपने रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारी टेक्निकल कॉम्पिटेंस कैसी है, हमारी मैन पावर कितनी कॉम्पिटेंट है, या हमारे एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे पास क्या पर्टिकुलर ऐसी स्ट्रेंथ है. दैट विल हैव टू सी, एंड इफ देयर आर एनी लिमिटेशंस or weaknesses, how we are going to overcome that limitation or weakness, that aspect has to be taken into consideration. So it means that in feasibility analysis, we'll have to see the external environment as well as the internal environment of the organization. And then we'll have to do the feasibility analysis also. Now here, the idea might be very novel one, very innovative one, but we will have to see its long-term sustainability also. हो सकता है कि वो आइडिया कुछ समय के लिए लाभदायक हो, लेकिन हमारा जो उद्यम है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है. साथ ही साथ हमें देखना होगा कि आइडिया अच्छा होने के बाद भी क्या उसे व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है अथवा नहीं, whether it is feasible or not, particularly from the perspective of market. Idea is new, unique and novel one, but अगर उसकी आप डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते या वो आइडिया अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, in that case idea will not be feasible and viable. Similarly, idea might be new and novel one, but you are not having that technical know-how to implement that idea. You cannot produce in bulk, then it is not viable and feasible, and you'll have to see the finance part also. So you will have to carry the feasibility analysis in terms of market, in terms of technology, in terms of finance also. As far as the market analysis is concerned, you will have to see that what are the prospects of the product. In fact, demand should always be growing and you should be able to cater that demand, number one. And secondly, you will have to calculate the perhaps what is the present affairs of the market. Market analysis is quite important to ensure that product is really viable and feasible. And then the financial analysis, again in the feasibility, you will have to see the financial appraisal also, that is what is the cost of land, what is the cost of plant and machinery, what are the provisions for the contingency, what are the preliminary cost estimation, what are the working capital requirements,
what is the cost of production and sales and production estimates. So you will have to do the realistic calculations in advance okay, when the product will be implemented, then in that case, whether you will be able to sustain in the long term in terms of the finance part or not. So at least you will have to calculate, and the more realistic the calculations are, perhaps your project appraisal and project planning will be both perhaps realistic and more convincing. So market analysis, technical analysis and financial analysis is quite important from this perspective. And then one has to develop the functional plan also. Functional plan in terms of production and operation plans, marketing plans, HR plans and the financial plans. So all the plans will be prepared in advance. ये सारी जो चीजें हैं कब कर रहे हैं? When you have not yet started the actual production or operations, number one. And in case of the existing business, if you are having some new expansion and diversification program, even in that case, you will have to analyze all these data and information in a very realistic manner. And in that context, what is important here is marketing plan will have to develop in advance in terms of the 4 P's. And these 4 P's include what? 4 P's? What are the 4 P's of marketing? Price is one. Product is one, yes, product. What the product is, that is the first P. Second, yes? Customer to see हो गया. Publicity. पब्लिसिटी को हम रखते हैं प्रमोशन में. प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्रमोशन. थर्ड पी प्राइस. एंड द फोर्थ पी इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. तो हमें देखना होगा कि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, वो प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, प्रमोशन के बारे में और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमारी क्या रहेगी. What will be our strategy? That has to be decided well in advance. That is your marketing plan. Then obviously the production or operation plans are important. That is what will be your total production. You will have to decide आपका प्लांट का, आपके प्रोजेक्ट का लोकेशन कहाँ होगा, उसका लेआउट किस प्रकार का होगा. Then you will have to see the cost part also of the machines, equipment, plants, etc. कौन लोग उसे सप्लाई करेंगे, who will be the distributors or manufacturer of these equipments, from where you will be procuring them, quality management के लिए आपकी strategy क्या होगी. इसी प्रकार से you have to see that आपकी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी प्रोडक्शन की होगी वो कितनी होगी, इसके बारे में कैलकुलेशन सारा एडवांस में होना चाहिए. दैट इज रेफर्ड एज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. एंड ऑफ कोर्स it has not yet started, but here we believe that whatever your projections are, whatever your plans are, you will be implementing accordingly, and it will provide you an overview or a realistic picture about the future implementation of your plans and projects. And then you will have to develop the operational plan also. What will be the form of ownership? That is to be decided in advance, particularly in case of new venture. Is it the एक ही व्यक्ति उस व्यवसाय का स्वामी होगा, या साझेदारी के फॉर्म में हम उसको स्टार्ट करेंगे, या कंपनी होगी, या इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एनी ट्रस्ट और सोसाइटी. दैट इज टू बी डिसाइडेड. हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस प्रकार का होगा, क्या हम सारी चीज़ें सेंट्रलाइज करेंगे या डिसेंट्रलाइज करेंगे, दैट इज टू बी डिसाइडेड. एंड फाइनली यू हैव टू डिसाइड कि कौन कौन से ऐसे नियम और नीतियाँ ऑर्गेनाइजेशन की होगी
जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ठीक प्रकार से कार्य कर सकें. इट मीन्स दैट विल हैव टू सी द ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल प्लान्स आल्सो इन एडवांस. एंड देन फाइनेंशियल प्लान्स आर टू बी डेवलप्ड इन एडवांस. अगेन हमने जो बात की थी, very specific financial plan should be there. That is, what will the cost, then cash flow अगले 5 साल में किस प्रकार से होगा, probable expenditure हमारे कौन से होंगे, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आएगा. दैट इज वो कौन से स्थिति होगी जहाँ की प्रॉफिट और लॉस बराबर होंगे. हम कितने समय में अपने उस लेवल पे आ पाएंगे जहाँ हम अपने लॉसेस को और प्रॉफिट को बराबर कर पाएं, और हमारी जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो अगले 3 साल या 5 साल में किस प्रकार का होगा. दैट इज टू बी डिसाइडेड वेल इन एडवांस. एंड देन आफ्टर दिस यू विल हैव टू डिसाइड अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लान. हमारे संस्थान में जो लोग कार्य करेंगे उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो किस प्रकार का होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट किस प्रकार का होगा, एंड फाइनली कंपनसेशन या वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा. दैट इज टू बी डिसाइडेड. सो व्हाट यू फाइंड, लगभग वो सारी चीज़ें जो कि एक्चुअली इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे उसको हम पहले से हम प्रोजेक्ट करते हैं. इट इज़ जस्ट ए मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जो कि हम ऑन पेपर्स कर रहे हैं कि इस प्रकार से हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो कार्यकलाप होंगे वो होंगे. ऑफ कोर्स देयर माइट बी सिचुएशन विच इज अनफोर्सनेबल. देयर माइट बी सिचुएशन वेयर वी मे डेविएट फ्रॉम ऑल दिस प्लान. लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है. कुछ कंटिजेंसीज को, कुछ रिस्क को हम ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन जितना हमारा प्लान रियलिस्टिक होगा परहैप्स हम अपने रिस्क को भी कैलकुलेट कर पाएंगे और हम अपने स्टेक होल्डर्स को भी अपने प्लान और प्रपोजल के बारे में ठीक प्रकार से कन्विंस कर पाएंगे. और साथ ही साथ व्हेन वी प्रिपेयर अवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो कि अगली स्टेज है, उनमें भी सारे कैलकुलेशन एस्टिमेट को हम ठीक प्रकार से प्रेजेंट कर पाएंगे. और साथ ही साथ हम अपने जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जो लैंडर्स हैं उनको भी ठीक प्रकार से सेटिस्फाई कर पाएंगे. And then the next stage will be on the basis of the calculation that we have done. Now we can decide our project report. Normally, whenever you will be approaching, as already mentioned, for finances, whether short term, long term, whether it is the financial institution or the banks, they will always ask for the project proposal or बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन. तो आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो सारा इन्हीं कैलकुलेशंस पर जो कि हमने बिजनेस प्लान्स में कैलकुलेट किए हैं, ऑन दैट बेसिस यू विल बी प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन डिटेल. नाउ इन ऑर्डर टू डेवलप दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स who can provide you the estimate and they can develop a project report on the basis of the estimates that you have given to them. So that is the 6th stage, and last stage will be here, that is evaluation, review and control. Periodically when you start implementing your plan, then you will have to evaluate it on the regular basis कि जो आपने एस्टिमेट किए थे आप उन एस्टिमेट के कितना करीब हैं. यदि उसके करीब नहीं है या आपको सिचुएशन बदल गई है, accordingly you can revise your calculation and estimates also. But here the question is what you will revise unless you have certain data or figure which you have already estimated. So evaluate, plan और साथ ही एक कोशिश की जाए कि whatever the projections have been made, accordingly you will try to keep the realistic or the real implementation just according to your plan and project. So that is referred as evaluation, review and control. So
These are the important aspects of any business plan. In fact, when you prepare it in a form of a report or presentation, start with the first aspect, that is referred as timeline, company का नाम, entrepreneur का नाम, date on which the business plan was prepared, and the detailed contact and address, that is referred as timeline. You will have to develop the executive summary. अगर कोई पूरी रिपोर्ट ना पढ़ना चाहे तो एक समराइज फॉर्म में सारे कैलकुलेशन, सारे एस्टिमेट हमें 2-3 पेज में देने होंगे, और उसके बाद जैसा हम यहाँ देख रहे हैं लगभग वो सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस प्लान के अंतर्गत इंक्लूड करनी होगी, एंड दैट कैन ऑलवेज बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट. नाउ हियर there are certain problems, certain limitations, certain constraints which we must keep into consideration while developing the business plan, report or presentation or preparation. So what these limitations are? एक मिनट पहले, उसके पहले when you are presenting it, what you find? The first one is the cover sheet. Number 2, that is table of content, what you have included. The third, as already mentioned, the summary, executive summary. Part 1 of the business plan will be the organization plan, marketing plan, financial planning, and finally the supporting document. Whether it is a project report or a business plan, you will have to include, you will have to calculate all these, and you will have to present your business plan in the same form or format. So I was just mentioning about the limitations or constraints or certain points which must be kept into consideration while developing a business plan. The first one is, business plan should be prepared in a very professional manner, and that's why what is important is that whether it is the format of the plan, whether it is a printed report, it should be very neat, clean, perfectly typed and presented in a beautiful manner. So it should not be presented in a form of a rough copy. यदि बहुत है आपने crude way में अगर से present कर दिया है, in that case आपके stakeholders उससे प्रभावित नहीं होंगे. So the first important point is that it should not be in the form of a rough copy, but it should be in a very professional way it should be presented. Secondly, जब आप calculations कर रहे हैं, whether it is financial or marketing or production or operation, it must be as realistic as possible. That is important. Otherwise, जिस उद्देश्य के लिए आपने business plan develop किया है, it will be completely defeated. So, जब आप कोई चीज उसमें लिख रहे हैं, you must have a justificable reason that why you have calculated it. Try to keep it as realistic as possible. You must have a logical ground to present data, information, facts, etc. यदि आपने outdated या historical fact or information आपने दी है, वर्तमान स्थितियों को ध्यान में नहीं रखा है, it will not be realistic and it will defeat the very purpose of the business plan. The third important thing is that यदि आपने जो assume किया है, आपके जो prediction है, वही completely unrealistic है, बहुत बड़ा चढ़ा के present किया है, या ऐसे जो कि realistic लगते ही नहीं है, in that case perhaps it will not be worthwhile or trustworthy. तो ना तो आपका underestimate होना चाहिए, ना overestimate होना चाहिए. It means that it must be as realistic as possible. And then what is important is that even if you have taken help of some experts, some consultants, some chartered accountant, at least as an entrepreneur, you must be aware about the financial projection, because lending institution may always ask about
द डेटा अबाउट योर कैलकुलेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई भी गई है बाहर से, तो भी आपको उसके बारे में जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो एनालिसिस है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि आप अपने स्टेक होल्डर्स को ठीक प्रकार से कन्विंस कर सकें। एंड फाइनली वी कैन से दैट what is important is that we should give the projections in a manner where हमने सारे जितने भी फैक्टर्स एनवायरनमेंट के हैं उन फैक्टर को ठीक प्रकार से कंसीडर कर लिया है, उसके बेसिस पर ही हमें ये डेटा देने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जो डिफरेंट आपके वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस प्लान्स को, वो आपने कंसीडर किए ही नहीं। दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर इज दैट व्हाट इज योर स्टेक इन दैट पर्टिकुलर वेंचर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यदि आपका अपना कोई स्टेक ही नहीं है, आपने कोई रिस्क ली नहीं है उसमें, या ये लगता है स्टेक होल्डर्स को कि आपका कोई इसमें कोई इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा है नहीं, सारा का सारा जो स्टेक है वो दूसरों का है, इन दैट केस परहैप्स अगेन इट विल डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द बिजनेस प्लान। और इसलिए ये बातें भी आवश्यक है कि आपका अपना स्टेक उस बिजनेस में है, आप किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका फाइनेंसेस में कितने, आपके जो ओन कैपिटल कितने उसमें लगी हुई है, that should be clearly mentioned in the business plan. So in nutshell we can say that whenever you are starting your own venture, develop detailed planning business plan, prepare it in a report, do every projections, forecasting, and on that basis develop a good project report which must be realistic. And if you develop that business plan, there will be two advantages particularly. Number one, अपना आइडिया आपको जनरेट करना है और उसी प्रोडक्ट को शुरू करना है, वो सर्विस प्रोवाइड करनी है जो कि आपकी उस मार्केट कम्युनिटी में, आपका मतलब ये मार्केट से है, मार्केट की नीड को सेटिस्फाई कर सके। अदरवाइज अगर कम्युनिटी ने या मार्केट ने अगर प्रोडक्ट को सर्विस को एक्सेप्ट नहीं किया, इन दैट केस उस उद्यम को आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जिस सेक्टर, जिस कम्युनिटी या जिस प्रोस्पेक्ट को आपको डील करना है, उससे आप फीडबैक लें कि किस प्रकार की आवश्यकता है, व्हाट आर द नीड्स, और किस प्रकार की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके टेस्ट क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, एग्जिस्टिंग जो आपके सप्लायर्स हैं वो कौन है, किस प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या प्राइस है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बना सकता हूँ, मैं क्या रेंडर कर सकता हूँ, ये इतना मैटर नहीं करता। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा जो क्लाइंटेल है, मेरा जो कस्टमर्स है, उसकी नीड क्या है। अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू डेवलप द आइडिया एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डेवलप द बिजनेस प्लान, नंबर 1। एंड सेकेंडली, जैसा आपने कहा कि छोटे छोटे आइडियाज़ को हम डेवलप करें और उनमें से, क्योंकि सारे आइडियाज़ एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे आप, उनमें से आपको जो आइडिया सबसे अधिक व्यवहारिक लगे और जिसमें आप सस्टेन कर पाएँ, प्रॉफिटेबल भी हों, इट इज़ ए विन विन सिचुएशन। कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो और फ़ायदा आपको भी हो, ताकि आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएँ, उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करें। बहुत सारे आइडियाज़ के बजाय काम करने के, once you have developed the idea, you will have to select the best one, और लेटर स्टेज पर जब आपका आइडिया सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद अपना एक्सपांशन प्रोग्राम में आप दूसरे जो आपके आइडियाज़ हैं जो कि वर्थवाइल और वर्केबल हैं, उन पर भी काम कर सकते हैं। तो जैसा हम हमेशा प्रीच में करते हैं कि स्टार्ट स्मॉल एंड देन ग्रो बिग, वो वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा है, बजाय ये कि बहुत जगह एक साथ आप काम करें। दैट इज़ माई सजेशन। सो जिस कम्युनिटी में, जिस क्षेत्र में आप हैं या जा रहे हैं,
वहाँ की नीड्स को देखते हुए आप पहले आइडिया डेवलप करें एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट प्लान एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल। सर एक चीज और थी इसमें, हाँ सर। बजट को लेकर के कहीं पर अगर थोड़ा सा बता देते तो Yes. बिजनेस प्लान में बजटिंग कैसे करें? बजटिंग कैसे करें सर? जी। बहुत आपने अच्छी बात कही कि व्हाट इज बजटिंग? एंटीसिपेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट? और जब आप बजटिंग करेंगे बिजनेस प्लान में तो आपको बजटिंग किन किन चीज़ों में करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली एक तो आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके हैं, जैसे नेचुरली आपको असिस्ट हेल्प करने के लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, 2, 3, 4, 5 या अधिक जो भी आवश्यकता है, उनकी प्रोजेक्टेड उनकी सैलरी या उनके कंपनसेशन पैकेज क्या होगा? यदि आपका अपना प्रेमिसेस खुद का नहीं है, in that case you will have to hire, you will have to get some rental premises. उसका किराया क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, अन्य जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो अप्रॉक्सीमेटली आपके कितने होंगे? आपको हर चीज़ के बारे में एक रफ कैलकुलेशन, क्योंकि ये तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उस जगह के लिए रेंटल वैल्यू क्या आएगी, या आपके उस फील्ड में काम करने के लिए जिन लोगों का आप जो खर्चा होगा वो कितना होगा, दैट यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट। आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी शू में कितनी होगी, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा, इट इज़ अगेन ए रनिंग एक्सपेंसेस आपको जरूरत पड़ेगी, दैट यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट। तो एवरी माइन्यूट डिटेल जस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई कि किन किन क्षेत्रों में आपको किन किन मदों पर आपको खर्च करना है और उसकी प्रोबेबल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, ईयरली कॉस्ट क्या होगी, नेक्स्ट 5 इयर्स में कॉस्ट कितनी आएगी। इसी प्रकार से जो रेवेन्यू साइड है आपकी, प्रोजेक्टेड सेल्स आपकी कितनी होगी, आपके इनकम के सोर्सेज क्या होंगे। सो यू विल हैव टू कैलकुलेट ऑन दैट बेसिस कि आपका जो प्रोजेक्टेड इनकम है फॉर 1 ईयर, 2 इयर्स, 5 इयर्स, वो अप्रॉक्सीमेटली, नोबडी कैन कैलकुलेट एग्जैक्ट अमाउंट, बट अप्रॉक्सीमेटली एक ब्रॉड आइडिया आपको ज़रूर होगा कि सब चीज़ें अगर चलती रही ठीक ठाक तो दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ इनकम, दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, और ऑन दैट बेसिस प्रोबेबली आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा। हो सकता है कि इनिशियल ईयर में आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन ग्रेजुअली जब आप कैलकुलेट करेंगे फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, 7 इयर्स, देन प्रोबेबली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट फिगर ऑल्सो। और यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट्स नहीं हो पाएंगे या जो रेट ऑफ रिटर्न है कम आएगा या प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, सो इन दैट केस इवन एट दिस स्टेज अभी कुछ नहीं हुआ है, यू कैन थिंक ऑफ सम अदर आइडिया बिकॉज इट इज़ नॉट वायबल और फिजिबल। कैलकुलेशन से आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि प्रोजेक्ट वर्थवाइल है या नहीं। सो ऑन दैट बेसिस यू कैन डेवलप योर बजट, एंड अगेन आई विल रिपीट कि as far as possible, like other calculation, your budget should also be as realistic as possible. Don't be over ambitious or don't underestimate the expenditure also. जितना realistic होगा उतना ही आपका बजट, आपका जो प्लान है वो रियली वर्थवाइल होगा और उसका आपको फायदा मिलेगा।